Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 9 and the name of our unit is safety. Today is the review of this unit, यानी कि आज हम तमाम मसले उसको रिवाइज करेंगे. One by one हम reading pages को भी देखेंगे, कुछ मैं oral questions करूँगी and by the end I will provide you with an assessment sheet. So my dear students, the recap of the previous lecture, what should we do in any emergency situation? You can call the police at 15 or the rescue team on 1122. So my dear students, see these are the student learning outcomes that alhamdulillah we have covered all of them. So one by one चलें इनको revision करते हैं. So my dear students, let's start. In the first lecture we discussed about how can we save ourselves and others by keeping in all the precautionary measures. यानी कि बिजली की चीज़ों से दूर रहें, शार्प चीज़ों से दूर रहें, आग की चीज़ों से दूर रखें. इस तरीके से आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं. How electrical appliances are risky in use? अगर आप इन्हें गीले हाथों से टच करेंगे, इनके ब्लेड्स को टच करेंगे या बहुत गर्म चीज़ों को हाथ लगाएंगे तो दे कैन बी रिस्की. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देन वी डिस्कस व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड बी यूज. बेयर वायर्स को आप हाथ मत लगाएं. डैमेज प्लग्स के अंदर सॉकेट स्विच जो है वो मत इंसर्ट करें. डैमेज रूफ के नीचे मत रहें. ब्रोकन ग्लास से दूर रहें. सो दीज आर सम प्रिकॉशनरी मेजर्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी स्टे सेफ इन डिजास्टर सिचुएशन? सो डिजास्टर्स में आप किस तरीके से महफूज रह सकते हैं कि आपने अर्थक्वेक की सिचुएशन में आपने क्या करना है? ओपन स्पेस में जाना है. इसके अलावा आपने भागना दौड़ना नहीं है. अगर इफ़ देयर इज़ अ फ्लड, सो स्टे अवे फ्रॉम द वाटर, फास्ट मूविंग वाटर लाइक रिवर्स एंड कैनाल्स. और अगर कोई तूफान है तो स्टे इन दिस शेल्टर एंड स्टे अवे फ्रॉम द विंडोज़. Then my dear students, so how should we share everything with our parents? So my dear students, कोई stranger अगर आपसे बात करने की कोशिश करे या आपको कुछ दे, do not accept it and quickly discuss it with your parents. Then we also made a project on the rescue numbers, where that is 1122 and the police number that is 15. So keep these in mind और आपको अपना एड्रेस और अपना नाम, फ़ोन नंबर पता होना चाहिए ताकि आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें. So my dear students, for practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and the roll number. This is a test by the way जो कि आपको complete करके अपनी टीचर को सबमिट करना है. So write some risk of use of electrical appliances. Write some safety measures we should do at home for safety. What are some disaster situations? How can we stay safe from strangers? Danger. Pause the video and quickly complete it. I hope everybody has done it. For homework, you will do MCQs given on page number 79 and 80. You will do the question in your book. So my dear students, in this unit and you will the wrap up of the lesson. So my dear students, in this unit we have discussed कि किस तरीके से हम अपने आप को अपने इर्द गिर्द के लोगों को सेव कर सकते हैं, किस तरीके से मुख्तलिफ सिचुएशंस जो हैं या मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिस्क हो सकती हैं, आपने उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि आप खुद भी सेफ रहें और आपके इर्द गिर्द के लोग भी महफूज रहें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि हमने स्टार्ट के लेक्चर में बात की थी कि हमारा जिस्म जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, तो आपने इसकी हिफाजत करनी है और अपने इर्द गिर्द के लोगों की भी हिफाजत करनी है. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.